बुल्ला, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फिजियन फोकस और मैं हूं आप सबकी दोस्त एंड होस्ट शिप्रा शर्मा। हमारे प्रोग्राम को प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ क्वांटलन, सिल्वरटूथ एंड मॉस्क्यूम नेशन। आप सभी की फ़ोन कॉल्स के लिए, फीडबैक के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए फिजियन फोकस टीम को आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जून पहले ही वी ऑल नो कि जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है। वी आर इन द मंथ ऑफ जून और जो ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेजुएट होने का समय आ गया है, तो उन बच्चों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो हमारे बच्चे जो कि 12 ईयर्स में हैं और उनका फाइनली ग्रेजुएशन का टाइम आ गया है, तो बच्चों को और उनके पूरे परिवार को वी आर रियली कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल. So congratulations to the graduating class of 2022. Or there's one more thing that June is a defensive driving awareness month और इस month में पुलिस and ICBC will be out in full force to stop people drinking and destructive driving. क्योंकि सेफ्टी से ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, तो पुलिस जो है वो पूरी फोर्स से ध्यान रखेगी ताकि लोग सेफ ड्राइव करेंगे. एंड ऑलवेज हैव अ डेजिग्नेटेड ड्राइवर विद यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू पार्टी में जाएं, बट कुछ अच्छी ऑप्शंस के साथ जाएं, चाहे आप ऊबर लें चाहे टैक्सी लें, ताकि आप अपना और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रख सकें. There's one more announcement for you. BC is the first province जहाँ पर illicit drugs को legalize किया जा रहा है. आप अपने यूज़ के लिए 2.5 मिलीलीटर को यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ जस्ट फॉर BC अलोन एंड 1 in 5 person dies with illicit drugs. This legalization will come in effect as of January 1st, 2023. तो जनवरी 1 2023 से ये जो है लीगलाइज हो जाएगा एंड दिस इज़ अ 3-year प्लान. सो चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स को. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फिजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी. लीजिए सुनते हैं. नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद. फिजी पुलिस फोर्स ने नकासी के वानिम्बुकु नकासी में एक चोरी के कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह आरोप लगाया गया है कि 40 वर्षीय व्यक्ति ने एक घर में तोड़फोड़ की और विभिन्न सामानों को चुरा लिया, जिसमें से कुछ एक बोरी में पैक कर भाग गया. माना जाता है कि पड़ोसियों ने संदिग्ध को परेशान किया और पास की झाड़ियों में भागने के लिए उन्हें बोरी गिरा दिया जब वो भाग रहा था. डॉग यूनिट सहित पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर तैनात किया गया, जहां कैनान ने सेंट को उठाया और उस दिशा में ट्रैकिंग की जहां संदिग्ध भाग गया था. फिर उसे गिरफ्तार कर नसीनू पुलिस स्टेशन ले गया, हिरासत में रखा गया है. जांच अभी भी जारी है. पुलिस और K9 यूनिट द्वारा ईस्टर्न डिवीजन में बुरेलेव विलेज में कल ड्रग रेड को छापेमारी के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ACP अब्दुल खान का कहना है कि उनके खेतों में 140 से अधिक पौधे जब्त किए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे marijuana के हैं. जांच जारी रहने के कारण पौधों को विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है. ACP खान का कहना है कि नॉर्दर्न डिवीजन ऑपरेशंस टीम द्वारा किए गए एक मॉप अप एक्सरसाइज के परिणाम स्वरूप नावी दकाउंड्रोवे में तोंगा के एक फार्म हाउस में marijuana के पौधे जब्त किए गए हैं. एक संदिग्ध हिरासत में है क्योंकि जांच अभी भी जारी है.
इसी तरह के अभ्यास एक्सरसाइज कानाकाना विलेज तोनोलोआ में किया गया है, जहां 20 वर्ष एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। माना जाता है कि पौधे marijuana की थी और उसे जब्त कर लिया गया है। नॉर्दर्न डिवीजन के वोलोवी में एक दुकान के अंदर एक व्यक्ति को सूखे पत्ते के 150 से अधिक पाउच मिले हैं। 3 बच्चे, जिनमें 13 और 14 वर्ष के बच्चे शामिल हैं, के साथ एक टीचर ने 2020 से लेकर 2022 तक यौन शोषण किया है। यह बात कंदावू में पुलिस आउटरीच प्रोग्राम के दौरान कहा गया था। पुलिस चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ACP अब्दुल कहान का कहना है कि विक्टिम के माता पिता और 3 अलग हादसे की शिकायत कंदावू पुलिस स्टेशन में की थी। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कंदावू भेजा गया है, जहां मामले की छानबीन की जा रही है। व्यक्ति पर यह हमला के छानबीन के आरोप तथा अनुचित व्यवहार के 3 आरोप लगाए गए हैं। खान का कहना है कि टीम स्कूल्स में जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभियोग को सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिजी लॉ सोसाइटी का कहना है कि वुमेन मिनिस्टर द्वारा दी गई स्टेटमेंट सही नहीं है। फिजी लॉ सोसाइटी प्रेसिडेंट वाली क्लर्क का कहना है कि जुडिशल तथा एग्जीक्यूटिव के बीच दूरी होनी चाहिए। रोज़ी अकबर ने नेशनल एक्शन प्लान अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मीटिंग के दौरान कहा है कि जज को बतलाकर या लेकर कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए थी। अकबर ने हाल ही में अदालत के फैसले को निंदा की है। फिजी लॉ सोसाइटी प्रेसिडेंट का कहना है कि जुडिशरी अपना काम जानती है और उन्हें कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। लंबे समय से ब्रिटिश कोलंबिया के टीचर, लेबर और पॉलिटिशियंस और राजनीतिक जिमी सिम्स ने घोषणा की है कि इस गिरावट के दौरान म्युनिसिपल इलेक्शंस होने पर सरी के मेयर के लिए इलेक्शन में उनका इरादा है। सिम्स ने बुधवार को न्यूली फॉर्म्ड म्युनिसिपल पार्टी सरी फोर्ड को पार्टी के 4 घोषित किया है और डिक्लेयर्ड काउंसिल कैंडिडेट्स में रेमंड बिडोंग, जिम बेनेट, जियून लेव और टेरेसा पेडकॉक के साथ एक कार्यक्रम में इसे आधिकारिक बना दिया है। सिम्स ने RCMP के सरी पुलिस सेवा के संक्रमण के संदर्भ में सरी निवासियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प खोजने के बारे में बात की है। शहर में उन लोगों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है कि मानना है कि परमिट अप्रूवल्स परियोजना के योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और भवन आवेदन का स्वामी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी वापस लाने के लिए उसने कहा है कि ट्रांजिट को अधिक सुलभ बनाने के लिए काम करेगी। कम समय में आने जाने के लिए अधिक अच्छी तरह के भुगतान करने वाली नौकरियां और हमें शहरों के करों पर लाइन पर लाना पड़ेगा। सिम्स ने 2017 से एक न्यू डेमोक्रेट के रूप में सरी पेनोरमा की प्रांतीय सवारी का प्रतिनिधित्व किया है और 2011 से 2015 के बीच न्यूटन नॉर्थ डेल्टा के सवारी के लिए संसद के NDP सदस्य के रूप में भी काम किया है। सिम्स ने हाई स्कूल टीचर के रूप में भी काम किया है और 2004 से 2007 के बीच BC टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष थी। सिम्स और सरी काउंसिलर 15 अक्टूबर को होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस में वर्तमान सरी मेयर डग मैकेलम के लिए ब्रेंडन लॉक पहली बार घोषित चुनौती है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। OFC चैंपियंस लीग नेशनल प्लेऑफ जून में होने जा रहा है, जिसमें लोटोका और रेवा एक दूसरे के साथ अपनी ताकत आजमाएंगे। पहला मैच जून 17 को लोटोका के चेचिल पार्क में खेला जाएगा। रेवा और लोटोका में से जो जीतेगा वो न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइलैंड्स, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी, टहीटी और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी FC के विनर से भिड़ंत करेंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बोला। जो लोग फिजी इन फोकस को देख रहे हैं, आप सभी को कमिला सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं विमल रेड्डी जी, जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर हैं। और ये मूवी प्रोड्यूसर ऐसे नहीं है कि कहीं पर ये मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका जो स्पेशलिटी है, ये हमेशा फिजी जाते हैं और जितना वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर होता प्रोड्यूस करते हैं फिजियन मूवीज़ और हिंदी मूवीज़। उसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। सो वेलकम विमल जी। थैंक यू कमिला जी। ओके, सो आप ओरिजिनली या फिजी के हैं?
जी, originally I was born in Singatoka अच्छा originally, and I lived there for about 35 years, अच्छा and then I migrated to Melbourne, Australia. सो अभी आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं जी मेलबर्न में हाँ, last 22 years से मैं वहीं हूँ. अच्छा और आपका काम भी है आप उसके साथ में काम करते हैं जोनी कुमार जी के साथ में जी हाँ, well, my full-time job, day job, is different. या पार्ट टाइम मैं That's मूवीज़ good. बनाता हूँ. 3 मूवी बनाया हूँ फिजी में. अच्छा अधूरा सपना, घर परदेस और हाईवे टू सुबह फीचर मूवीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दैट जॉन कुमार के साथ में हम करते हैं इवेंट वीडियोग्राफी या एंड फोटोग्राफी. जॉन फोटोज उतारता है. तो आप हिंदी मूवी बनाते हैं फिजी में फिजी हिंदी. अच्छा हाँ, फिजी हिंदी जैसे हम फिजी में बात करते हैं हिंदी में जी हाँ. जी हाँ, तो फिजी. आपका जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो आपका जो क्रू वगैरह है आप ऑस्ट्रेलिया से सब जाते हैं शूट करने के लिए जी, ज़्यादा करके ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं, लेकिन हम फिजी से भी लेते हैं क्रू को. जैसे मैं हाईवे टू सुबह बनाया था, उसमें हमने फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी का जो फिल्म स्कूल है वहाँ से हमने 3 क्रू मेंबर्स को लिया था. और फिजी का जो लोकल मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है जो वहाँ से हमने 3-4 क्रू मेंबर्स को लिया. फिर इंडिया से हमारे 2 कैमरा ऑपरेटर्स आए थे हाईवे टू सुबह में. तो इसी तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट सेटअप होता है. अभी हम एक मूवी बना रहे हैं जो कोविड के कारण से रुक गया था. उसमें हमारा एक ऑस्ट्रेलियन कैमरामैन रहेगा और फिर फिजी में ज़्यादा करके जो क्रू मेंबर्स रहेगा फिजी से. तो आपका अच्छा हाईवे टू सुवा सो आप क्या उसमें दिखाना चाहते हैं हाईवे टू सुवा जस्ट लाइक हाईवे फ्रॉम नैंडी टू सुवा कि व्हाट हैपेंस इन द हाईवे और रोडवेज एंड ऑल दैट बट हाईवे टू सुवा क्या आपका टैगलाइन है क्या आपका Well, Highway to Suva स्टोरी लाइन Highway है to Suva is a full feature movie. अच्छा तो ऐसा है कि ये story is about a young teenage girl who actually elopes with someone from Lotoka, and the family is trying to look for her, and she's actually she has taken a bus ride with this guy, and they are going, running away from home basically, and we are showing all what happens, as the family and the police and everyone is searching for them, and they are traveling from one town to the next and reaching Suva. अच्छा So it's a family drama. It's about the girl is a South Indian girl and the boy is a North Indian Okay. boy, and the family is not too much in favor they're of not agreeable to the Yeah. relationship, and so it's a bit of a comedy and comedy drama you can call it, right? So that's the main storyline. Yeah. And whatever happens on the way. So the idea was to show the different towns when they stop over in Nandi and they stop over in Singatoka and Nabwa, etc., and a bit of fun and a bit of. So nobody could recognize. Acha, the police were looking for, the parents were looking for the. Acha, did they have to change themselves? Ki, They did a little bit, yeah. They did a little bit. The girl put a scarf on initially, so as they because it all happens within a day. Acha. So while they are searching, they are moving from one place to the other, and they were trying to hide from other people. Yeah, so it's not like they were on the road for a long time. They were on the road for a very short time, so they get caught eventually anyway. But it's a day trip. Acha. So they go from Lotoka to Suva on the bus. So how long? अच्छा उसका trip Lotoka to Suva कितना देर का रास्ता है? How long? 2 hours. 2 hours. 2 I hours, think, 2 express. hours. But it's आप अगर देखेंगे तो it's not just a bus ride. Yeah, I know. there's But it's there's like a lot of stopping. I mean, for the movie making. Okay, I'll tell you how it actually happens. Like, so what we did is we can't shoot the movie in one day. Yep. Right? So, it's a 2-hour trip, but we had to shoot the movie over several days. So what we did is we had 4 days of travel. So we traveled from Lotoka to Nandi, and then we pack up.
pack up, go back to your hotel and everything, and then reset up everything. So everybody is putting on the same clothes and everything, get back onto the same seat, so it's all marked, right? So the next day we go from, say, Nelly Town, go to Singatoka, then we finish everything there, we come back. We come back, then again next day we go from Singatoka to Navua, and then Navua to Suva. So the shoot takes place over 4 days to get less than 2 hours of shooting. So how long? That's what next question. तो आपकी जो मूवी है वो 2 घंटे का है. 2 घंटे का मूवी है. अच्छा. 2 घंटे का मूवी है, लेकिन shooting took place over 6 weeks. और कहाँ पर हम उसको देख सकते हैं? YouTube. Oh, आप YouTube. But this is an old movie, right? This is about. No, this from Highway to Suva. अभी तो कतई रिलीज भी नहीं हुआ ना. ना हो गया. Oh, this is an old movie, yeah. Oh, it's an old movie. This is an old movie. I'm talking about the movies that I made previously. अच्छा. जो new movie बन रहा है, वो तो अभी under production है, but Highway to Suva was made in 2014. So I can watch that. Oh yeah, absolutely right. It's कोई all भी there. देख सकता है. कोई भी देख सकता है, हाँ. So if anybody wants to watch, can go to YouTube and search for my name. I've got a channel there. Okay. So Vimal Reddy, and then you'll find it, and you'll see my movies in that channel. So Highway to Suva is there, Ghar Pardesh is there. So you are the producer. Producer, director, and writer. Oh, you are writer, director, and Writer. everything. One Yeah. person. Yeah, well, I don't shoot. So is there any money to be made in movies? Like here, I'm thinking about Bollywood, Hollywood, big time movies, no? Well, see, well, of course, we don't make movies for nothing. Yeah. Right? So it's not as big as Bollywood, Yeah. but we do sell DVDs. Not anymore. I mean, DVDs are out now. So the last movie was on DVD. First, we do screenings. So theater में हुआ था. Fiji में theater, Australia, New Zealand, all we did theater screenings, and then DVDs. अच्छा. So the new one that we are making, it'll be streaming. So we will put it on Prime or Netflix, things like that. So that's definitely, if you don't make money, then there's no point in doing it. But I mean, it takes a lot of time because it takes a lot of time. Yeah, I and mean, you it's take very your expensive. time off. Yeah, It's very expensive. So we pay. Fiji is not cheap. No, I'm telling you. absolutely. It's like we stayed there in the hotels and Yeah. all that, Of and food, there's get a lots of transportation. permissions to be taken, and so it's quite expensive. Yeah. So Fiji is a beautiful country, and there's a lot of Indians from India, Bollywood, and all that. They also go and do a lot of shooting there, no? कि नहीं? Well, lately I haven't heard much about. Because of the pandemic, I think, but Yeah. they use... Some years back, yes. Some years back, I think 7 or 8 years back, I heard some movies were being made. Okay. And then I think it slowed down a little bit. Pandemic से पहले भी बंद हो गया था. I don't know why, but lately I haven't heard of any movies. I remember some of the movies that were made there 7 or 8 years ago. And there is a film organization, I think it's called Film Fiji. Okay. Yeah, Film Fiji. And I went through them as well when I did my movies. Highway to Suva के समय पर, I did all the dealings with them and organizing everything, getting permissions and everything. So they're trying to build up the industry. My first movie, Adhura Sapna, in 2007 was the first Fiji Hindi movie. अच्छा. Yeah, so then the 2 other movies were made. Yeah. So that the one that I'm making now. उसमें आपके मूवी में गाने भी हैं? Oh, हाँ. अच्छा. हाँ, Highway to Suva में Javed Ali, I know. अच्छा. I don't know if you know Javed Ali, but Javed Ali is a famous singer. He sang in Pushpa recently, a Srivalli song. Javed Ali ने गाया था, और हमारे मूवी में 11 years ago Javed Ali गाया एक गाना. All my songs are made in Mumbai. अच्छा, जो एक गाने की बात कर रहे हैं, कॉपीराइट्स का बहुत भारी इशू है अभी. अगर हम भी YouTube से निकाल कर लगाते हैं, so My songs, I'm not really worried about that. I mean, So maybe we can get the release from you to. Of course, yeah, of course. Achha, You can even screen my movie on. Yeah, if you want, I can. I will show them. Yeah, if you go to YouTube and download the songs. Yeah. Your Highway to Suva ka title song here was very popular in Fiji. It was #1 in the charts in the radios those days. Yeah. It's a title song, Highway to Suva. वो
quite popular हुआ था और एक गाना हमने बनाया था छोरा सिटिया बजाए it's like a item number Yeah. so that became very very famous as well so yeah of course you can download and play it yeah That's wonderful. That's why we don't हमारी जो शो है उसमें ज़्यादातर गाना वगैरह नहीं लगाते हैं लेकिन इशू Oh, बन जाता mine you है. can, But yeah. yours we can. Definitely, So I've- that's yeah. wonderful. Good to know, Yeah. right? And Fiji is such a beautiful country. Lot of movies people can go and like everything is expensive. But, I mean, when you look at the scenery itself, Yeah. you know, it's beautiful place to shoot make them movies in Fiji. that's right I get Especially from Nandi or from Lautoka to Suva. Yeah, I get a lot of contacts from Indian film industry about filming in Fiji. And recently, I had a contact who was trying to find out a little bit of information. The problem that they face is that it's quite a long way from Mumbai. Yeah, yeah. And there isn't much movie making infrastructure, so they don't have a proper studio there, and they don't have the kind of Editing and all that, the equipment. Editing they will probably go back and do in India, but Yeah. the equipment that they need to shoot the movie, Yeah. they have very high tech equipment and they need cranes and stuff like that. So when they bring it over from India to Fiji, it's too costly for them. Yeah. So I think some of the impediments they have at the moment is the availability of resources in Fiji, a proper system whereby they can shoot, but they can hire equipment and shoot. So once that's sorted, I think there'll be more. More people Yeah, will definitely, definitely. But Fiji it's has- very cost effective, you know, काफी costly रहेगा because I mean you are paying everybody for food, hotels, and everything else, but Exactly. But rental of the equipment in Fiji that can add up For to smaller independent movie making, it's much easier. But for a big Bollywood blockbuster type movie, Fiji में नहीं है ना जो infrastructure Yeah. required equipment and crew and locations even you know I mean movie का हर scene beach पे नहीं हो सकता है ना तो they need a little bit more variety. So when I was discussing this with one of the producers recently, that's the problem that they are facing is that they won't be able to shoot the entire film there. Okay, this show is about the Fijian community. Most of our people are Fijians that are watching the show, and it's very nice to have you. You are visiting Surrey or Vancouver, and you'll be leaving before this interview will air. Most probably, what would you like to say to the people that are watching you today? क्या बोलना चाहते हैं उनसे? Well, मैं वही कहूँगा कि अगर किसी को interest है ऐसी film बनाने की you should put some effort into it. Filmmaking is an art. I think Fiji people need to try their hand at it. We grew up watching Bollywood movies, or Fiji के लोग भी कर सकते हैं. So I encourage young people to get into it, and I'm happy to help. I've been doing this for, I've been in this video industry for about 38 years. I was 21 years old when I started shooting events and things like that. So, and then I started doing feature movies. Happy to communicate. Yeah. So, I'm on Facebook. Okay. If somebody wants to contact me on Facebook, and if somebody is interested in acting, I'm happy to help you out. Yeah, talk to them, yeah. So, yeah, to those who are watching, please contact me, and I'm willing to guide you if you are new. And there are quite a few people who are actually contacting me quite often. I know that Andrew Chandra in the USA is making a movie right now, and some of them have been communicating with me. I am very happy to see some efforts being made, and I think his movie is being premiered shortly. So there's a few other people who are trying in Sydney and other places in Fiji. Even I've got some contacts in Fiji who are all trying, and collectively I think Fiji people can one day come up with a good movie, which the whole world can see. You know, so that's my message to everybody. Okay. Thank you so much. Be able to come in your short time that you are visiting families in here. That's my pleasure. Yeah. I mean, thank you for inviting me. Okay. And I would also like to say to everyone, those who have missed my movies,
please go to YouTube and check out my movies. It's there. And है कपिल शर्मा हम सबके फेवरेट जो है वो कनाडा में आ रहे हैं और झांझी प्रोडक्शन जे सानी एंड अरोड़ा इमिग्रेशन प्रेजेंट्स कपिल शर्मा शो ऑन जून 25th at PNE Coliseum Vancouver co-presents by Verka International Food. A ticket available at ticketleader.com. For more information, please contact Sam Jhaji जिनका नंबर है 7802670046. हमारे पास इतना ही समय था, लेकिन आपका प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा आपसे विदाई लेने का समय आ गया है और जाने से पहले हर बार की तरह यही कहूँगी, अपना और अपने चाहने वालों का, अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारे शो के साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमें प्यार देते रहें। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय ज़रूर किया होगा और हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं संडे को 4 PM और टाइम एंड इन कैलगरी में 5 PM चैनल 10 पर। फिजियन फोकस एयर्स ऑन ट्यूसडे एट 10 PM इन BC और कैलगरी में 11 PM। इसको रिपीट होता है एंड 4 PM ऑन संडेज इन BC एंड कैलगरी एट 5 PM। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए या किसी तरह की भी कोई जानकारी के लिए आप कमीला को कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है 604-537-5123। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा और थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर पार्ट ऑफ द डे विद अस।